एक वो फार्म है, यहाँ पे हम आए हैं जानवर देखने के लिए। लिली करके फार्म है। देखते हैं यहाँ पे किस तरह के जानवर मौजूद हैं। इसमें हम आए हैं जानवर की, देखते हैं कि हमें जो है वो किस तरह से मिलते हैं। ये एक पाकिस्तानी भी खड़ा है यहाँ पे जानवर ख़रीदने के लिए। आइए अंदर आपको दिखाते हैं क्या है। अल्लाह को हम पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे। देखें एक और फार्म है यहाँ पे। यहाँ पे मुर्गा वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ होता है। ये शीप है, ये बकरे हैं यहाँ पे कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह तगड़े तगड़े हैं। इनका कद जो है वो हाइट छोटी है, लेकिन इनकी सेहत बहुत ही अच्छी है। आगे आपको दिखाते हैं कि क्या है। यहाँ पे औरतें भी काम कर रही हैं। ये बकरे हैं। इनकी जो हाइट है, कद है, वो यहाँ के अपने हिसाब से जो ब्रीड यहाँ की है उसके हिसाब से, लेकिन ये कि जो ये वज़न में ये अच्छे लग रहे हैं, तगड़े लग रहे हैं माशाल्लाह से सारे। कोई भी ऐसा कमज़ोर मरियल सा नहीं नज़र आ रहा मुझे। सारे जो है वो अच्छे अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह से। हेलो, व्हाट्स इन देयर? Thanks, okay. You wanna pass? वहाँ यहाँ पे जो है पिग फार्म भी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो पिग भी है। फर्स्ट टाइम मैं इतना करीब और लाइव देख रहा हूँ ये पिग को। देखें ये यहाँ पे इनकी आवाज़ें भी आ रही हैं, जो इनकी एक मखसूस आवाज़ है, वैसे आपने सुनी होगी मूवीज़ वगैरह में, टीवी वगैरह में। तो यहाँ पे ये पिग खड़े हैं, देखें मैं आपको दिखाऊं। क्योंकि यहाँ पे जो गोरे हैं इनका गोश्त बहुत पसंद करते हैं, खाते हैं, तो यहाँ पे इनकी भी फार्मिंग होती है। फार्म है, ये है एक पिग, देखें आप। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, ये किसी जो है मजहबी या किसी के जज्बात या किसी और चीज़ के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो है वो जानवर जो है वो किस तरह से यहाँ पे पालते हैं, किस तरह से मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे पिग फार्म है, देखें ये खाली है, ये भी खाली है। आगे सिर्फ 2 या 3 इनके पास पिग थे जो मैंने आपको दिखाया। एक ये है, एक ये है। हेलो, और एक ये है, एक सोया हुआ है यहाँ पे। ये लेडी है केयर टेकर इनकी। अस्सलाम वालेकुम। एको फार्म पे हम आए हैं यहाँ पे बकरे देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे अकब में जो है बकरे खड़े हैं। यहाँ की जो नस्ल है वो थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट नस्ल है। इनकी जो वो सनलाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है, तो शेड थोड़ा सा मेरी आंखों में आ रहा है कि नॉट सी प्रॉपर्ली। ये देखें आप, बकरे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो पिग फार्म है, वहाँ पे हम नहीं जा रहे अभी। और ये जो यहाँ पे लेडीज़ हैं ये केयर टेकर हैं। ये बकरे थे, और आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बकरियाँ भी हैं। हेलो, दीज आर फीमेल्स, या ओके। यहाँ पे ये बकरियाँ हैं, ये बेचने के लिए बकरियाँ। यहाँ पे आप बकरियाँ भी ख़रीद सकते हैं। ये पूरा फार्म है, पूरा कैटल फार्म है, जहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है बकरे, बकरियाँ और बाकी जानवर भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ये लेडीज़ भी हैं, लड़कियाँ, औरतें भी। कैन आई रिकॉर्ड यू? हेलो, so you work here, right? Yes, I'm working here. Oh, that's great. What's your name? My name is Tutu. Tutu. That's great. That's very nice. Nice name. Yeah. So you were, how long you have been working here? Wow. And hello, another lady. How are you? I know you. Good. Hello. How are you doing? Hello. So how long have you been working here? I owe more than 7 years now. More than 7 years. And how about you? 8 years. Almost, she's senior, right? So what do you do? What's your actual job? I'm working with the Can we come in the shade? Okay. Yeah, so it's a sunlight directly. I see you. Yeah, that's great.
I'm working The with good one, nah? I'm working with the looking pretty. Okay. I work with the chickens, also the mother pockies. That is my job every day. Okay. Every day. For 7th year, you are doing the same job. Yes. So aren't you fed up? You must say, it is. They are paying me. Why should I fed up? No, why? Why must I? I can't. It's your job. You. I that means you enjoying enjoy my your job. job. Yes, I Yeah. enjoying my How job. about you, lady? Yes, me, I've been working for 8 years. I'm feeding the sheep. Feeding the sheep. Yes, and I also raise babies, Is baby the one? the small ones, yeah. Baby the sheep. Yes. Oh, okay, that's great. For 8 long years, you are doing the same job, and you also enjoying the job. Yeah, because I love animals. You love animals. Yeah, that's great. That's great. Okay, so you know isn't it a difficult job? No, No. very, very easy. Very easy job. That's Easy. good. So you are getting handsome amounts. Not handsome, but it's alright. Can manage. okay. Yeah. You are managing yourself. managed Oh, for okay, that's years. good. So where do you live in South Africa, Cape Town? Me, I'm saying Philippi. Me, Philippi? I'm also staying here in Philippines. Fly. It's a fly. So you are Philippi is after Philippi. Yeah, Fly, Philippi. Okay, that's great. So how you come here? They fetch us with the transport. Transport. The Yes. owner. Yes. Okay, you both of you. Yes. All of the workers. Yeah. Okay, that's great. That's great. And what are the conditions here, and how people are surviving, and what are their major source of income? And tell me about local thing that I do not know, and people want to know on the YouTube. And you have to subscribe my channel, okay? Like what? Like anything you want to share of South African or the culture or anything that the other people do not know. Yeah. You see, me, I'm only going to say, I enjoying working with animals. That's That is great. my job. That is great. That is Yes. great. Because you see what's happening. Oh, you got a store on your too. Yes. I just like. Because That's us great. here on this farm, we were blessed because during the corona pandemic, some people they lost their jobs. But us, we never closed. Corona hit all over the world, you know? Yes. Everywhere. The But us, we economy. never closed. We every day we worked, same salary, everything. It never affected us. Oh, that's Yes, great. That's the great. Corona. So you in Corona, the ladies are saying, I will speak in my local language to Okay. understand to tell the people. ये जो लेडीज़ हैं यहाँ पे ये बता रही हैं कि ये यहाँ पे जो फार्म पे काम करती हैं, ये जो है वो 8 साल से काम कर रही हैं, ये 7 साल से काम कर रही हैं, और ये सीनियर हैं, ये थोड़ी सी जूनियर हैं, ये फिलिपी में रहती हैं, ये फ्लाई में रहती हैं। और मज़े की बात ये कि जो यहाँ का ओनर है वो यहाँ पे इनको कम्यूट प्रोवाइड करता है, डेली बेसिस पे पिक एंड ड्रॉप देता है, और ये अपनी जॉब में खुश हैं। द पिंक लेडी लव्स एनिमल, also the in black jacket lady, she's also Love loves the job. chickens. Love chicken. Chicken. Her job to grow up the chickens, Yes. and her job to feed up the sheep. Yeah. इसकी जो जॉब है वो जो है वो शीप को खाना खिलाना है। दोनों जो है अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। और मज़े की बात ये है, ये अभी मुझे इन्होंने बताया कि कोरोना की कोविड-19 जो आया था 2019 है, जिसने पूरे दुनिया को हिट किया है, ये जो कह रही है कि इनकी जॉब उससे असरअंदाज नहीं हुई। ये डेली यहाँ पे आते थे, अपनी जॉब करते थे, और इनकी सैलरी भी इनको मिलती थी। Isn't it? Am I saying right? Yes. You are kidding? Yes, I get you. Whatever you said, I translate in my local language, in Urdu. Which country? Urdu. I'm from Pakistan. Oh, You hear Pakistan? yes, I heard. Yeah. I'm from Pakistan, and I am a traveler, the tourist. My YouTube channel, Nasar Hamza, the tourist. Oh, okay. Okay. Oh, I got a YouTube channel, Nasar Hamza, the tourist. You have to subscribe, you have to like, you have to share, you have to comment, and you have to ask the other family members and friends to subscribe. Okay. 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 Nice meeting you, ladies. Okay. That's Bye. great. That's great. Bye.